So let's start with the EOD prep session for tomorrow now. Bank Nifty के heavyweights we will see first. So first is your HDFC Bank. So yesterday एक halt में था जो हमने notify किया था यहाँ पे 1517 से 1530 and on the daily time frame it is still in this range and this is like first and second close outside the range, right? But now the volumes are not expanding, so इस पे trust नहीं कर सकते हैं. We have to wait. This could form a fake out or shake out to fill this gap. यहाँ पे एक छोटा सा we have a small gap over here. ये gap fill करने के लिए वो attempt शायद कर रहा होगा. So unless and until we see the good volumes here, it's better to wait it out. At least do not short this particular HDFC Bank. Okay. Now, this was your previous day range here, and yahin pe it halted, which is also near the support as well. Okay, and we do see the volume expansions as soon as price start making new low. So kahin na kahin, this signs indicates that possibility of fake out and shake out is very high. So instead of selling this particular stock, let it do what it's supposed to do in next 1 or 2 days, and then we will see if we can catch the early signs of bear trap. तो एक वो अच्छा trade मिल जाएगा. At least target around 2 to 3% का move in a single day on the upside if we see a trap or if our analysis is correct. Next stock is your ICICI Bank. ICICI Bank did a very cool price action today. The first one is your the EVSRs at the opening highs, move down, halted there a bit, then attempt again to break the big round number with a huge volume. But after this, never got any follow through with the good volumes. Closing bars, we don't trust much. So this is that. Okay. So now yesterday's lows, as we were discussing, could be, fake out shake out की तरह behave कर सकता है. That was we were expecting, but it did not happen. So if yesterday's low wasn't a fake out, then it will open the downside targets of 585, 572, and 560. Okay. Again, yesterday's volume suggested the end of the pullback. So we are still on it because nothing special happened today. Okay, and we are looking at the weekly close below 590 is do or die level, and price is just almost less than 1% away from that price. So Wednesday, Thursday, Friday, next 3 days we will know kya karna hai kya nahi. Next is your Kotak Bank. So Kotak Bank mein yesterday we had a value area zone. Price did come there and tested this value area zone, and यहाँ पे it halted, which is expected, right? From the value area zone, either price should bounce or either price should bounce or stay go into consolidation. That's what we expect from the value area zone when it approaches it for the first time. So yesterday we planned that positional entry and as well as intraday entry around 1945 1950 zone, basically this area, but iske pehle hi price got rejected and defined a resistance at that entry zone. Okay, so abhi 945 is our resistance as well as our entry zone. तो ये थोड़ा contradict है. तो यहाँ पे if you want to go long in this particular one, थोड़ा सा आपको पीछे confirmation लगेगा. Since we are way below that, तो वहां तक पहुंचने के लिए इसको यहाँ पे बहुत सारा confirmations दिखा के आना पड़ेगा कि buyers are strong, the movement is strong momentum bars, pop volume से break off every swing point जब तक वो वहां पे पहुंच रहा है तब तक, because it's like 3% or so का move. Okay, so वहां पे थोड़ा ध्यान रखना. So and intraday targets जो थे of this break of POS trend line, intraday target का first target was achieved, second target was 1945 and it made the high of 1941, so fell short by like 4 points to
to hit the target, and this was a rejection bar जिसने target attempt किया है, तो lot of selling might have happened over there. Okay, so let's see how the things goes for tomorrow. Axis Bank में yesterday we were expecting a test of seller is needed before beginning of new move, and if you check on the daily time frame, the kind of volume, the NR4 bar, everything suggests that yeah, the test of seller is done. Also ये जो इसका down move था, okay, I have taken the swing, the larger swing from the 5 minutes and ignored the fake out shake out at the boundaries, so I get this level, right? तो यहाँ से if you notice 50% and 38% के बीच में it's almost spent the whole day with lot of attempts. पहले rejection, test for the buyers, attempt to move down, and that down move was halted with a EVSR bar, right? And this EVSR bar also tested the high volume bar, which was already tested in the morning one time, two time. This is the third time it is testing it, and बाद में end में यहाँ पे आया. So tomorrow, if you know, I would have seen this kind of scenario at 3:15 today. मैं इसमें positionally एक long position लेके जाता for a gap opening for tomorrow. But anyways, this is like out of all the banking stocks, Axis Bank is showing a lot of strength, and जब भी move चालू होगा, the next leg of the up move, the Axis Bank can give you very better results in, if you do, you know, in like medium term perspective. So that's your Axis Bank. So now for tomorrow, we will be looking at the follow through above 50% mark, the consolidation ka high, or and if sustains above 51, तो फिर ये सीधा 72 के टारगेट्स के लिए निकलेगा, 72 75 के टारगेट्स के लिए निकलेगा, and 775 is the boundary of upper boundary of the range as well. Okay, next is your SBIN. SBIN is like, now if it doesn't move up soon, like tomorrow or day after tomorrow, फिर ये खराब हो जाएगा, right? So यहाँ पे count should be 17, not 16. Okay, so count 17 है, तो count के terms में we do have a week of time left, but the price action, the buyers activity, when they had chance, they could not push without like opposition from seller, they just stopped pushing, which is not a good sign. और यहाँ पे हमने ये वाला एक रेड जोन मार्क करके रखा हुआ था ऑन चार्ट, एग्जैक्टली टुडे वहीं से इसका रिजेक्शन आ रहा है, right? Rejection आया, it started moving down. Now we have to wait and see कि क्या होता है, कैसे होता है. So unless and until it crosses 369, which was this low, there is no point in selling this stock. If it crosses above 76 mark, you know, just यहीं पे 1976 यहीं पे अगर वो कल सस्टेन कर गया और यहीं से अगर निकलने का ट्राई कर रहे हैं, then there is a possibility. But if it, you know, starts moving down, फिर खत्म है. So ये वाला लेवल 13376.5 is here only, जहाँ पे उसने क्लोज किया है. So remember this level. ये लेवल कल अपना ओपनिंग कैसे होता है, just see the first 5 minutes का ओपनिंग कैसे होता है, whether it is trying to go up or trying to go down. Let it go up, फर्स्ट पुल बैक आने दो, और फिर सेकेंड टाइम जब अटेम्प्ट करेगा, दैट टाइम यू प्लान टू बाय, अदरवाइज उसको छोड़ दो, क्योंकि ओपनिंग ट्रैप भी हो सकते हैं. सो देयर इज नो पॉइंट शॉर्टिंग SBIN बिफोर 369. नाउ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स. सो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ने बराबर डे हाई के पास में एक EVSR बनाया था, and can argue about the local SNR forming, but since this swing low is from the previous day, थोड़ा confidence ऐसे भी कम होता है वो वहाँ पे. and then जब ये वाला बार बना तो यहाँ पे high volume rejection हुआ, तो this point and this point से local SNR बना के कोई मतलब नहीं होता, because वहाँ पे आपके target definitions would not have been matched. Okay, so EVSR किया, test for bias किया, and started moving down. So again, the end of pullback scenario still active,
एंड साथ ही में yesterday we discussed about the range extension, जो रेंज हम लोग अभी लेके चल रहे हैं, which is this one, right? 3500 से 36400 we are taking, हमने इसको अपसाइड एक्सटेंड किया था. And now on the downside, we can also extend it to the next level, that is this 3465. 34650 के levels पे we can extend this. So कल देखते हैं, कल यहाँ से एक bounce expected है. Also remember tomorrow is your Wednesday, so pre-expiry move के लिए भी we can pick. जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, सिंगल बार अप सिंगल बार डाउन, इसमें किसी को कुछ नहीं मिलता. ओनली शेकआउट्स एंड ट्रैप्स आर बीइंग बिल्डिंग अप. सो एक बड़ा मूव बिफोर एक्सपायरी विल हैपन, नहीं तो फिर दिस गाइज हु ट्रेडेड दिस पर्टिकुलर मूव विल बी इन प्रॉफिट. ओके, सो वो उनको नलिफाई होगा ही होगा. सो कीप हियर. सो रेंज एक्सटेंशन के लिए हम लोग देख रहे हैं, एक्चुअली देयर इज आल्सो अ टाइपो. इट्स नॉट 35350, इट्स 34350. No, एक minute. This is not, sorry. This is 35350. जहाँ पे resistance define हुआ, this red line which is coming through. This red line which is coming. ये इसने एक resistance define किया है फिर से, existing level पे resistance फिर से define किया है. If sustains above 35500, 35600, which is this particular box, जो हमारा कल भी था, end of pullback confirm हो जाएगा. आज के लिए रिजेक्शन 50% से आया, सो हम लोग ट्रेंड लाइंस के लिए भी ट्रेंड लाइन प्ले भी चालू कर देंगे. और इफ दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक्स प्रॉपरली, अगर इमीडिएटली ब्रेक होता है तो कोई मतलब नहीं है, बट इफ इट गोज डाउन एंड देन नीचे से ब्रेक करता है तो हमारे ट्रेंड लाइन के टारगेट्स विल ओपन, जो शायद 36200 तक जाएगा, विच विल बी अ वेरी गुड मूव टू ट्रेड. बट लेट्स सी कैसे होगा. आई विल अपडेट ऑन द ग्रुप. एज ऑफ नाउ हमको यहाँ पे पेशेंटली वेट एंड वॉच करना है. इन बैंक निफ्टी, ट्राई टू बी अ बायर इन बैंक निफ्टी. नीचे जाता है जाने दो. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एंड दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट यू शुड डू, बिकॉज देयर इज नो साइंस, इवन दो मार्केट फेल, दिस काइंड ऑफ मूव हैपन, राइट? हम लोग इसको, ये वाला स्क्वीज वी वर ट्रैकिंग, इट फेल. स्क्वीज के टारगेट तक ये डिफाइन नहीं कर पाया है टुडे, एंड इट मूव्ड दिस 3 bars. Clear sign के यहाँ पे there is a hidden sign of like opposite activity is present. And when you see this particular bar जिसने day low लगाया था, that is where hidden buying is also happening, right? So कहीं ना कहीं buyers are building. So थोड़ा सा उस हिसाब से, unless and until they gave up, हमको like sell की तरफ नहीं जाना चाहिए अभी भी. Okay. So today we were like, I was stuck on 34,975, right? Which comes somewhere here. This is your 34,975. You see, first break shakeout, second time closing के time पे आया है, और वहीं पे basically एक halt type structure भी create कर दिया है, right? So that is what you need to consider. Okay, its sellers are not still very active, so we should not be on the wrong side unless and until we are proven wrong. Next is your Nifty futures. Nifty futures is exactly behaving same as Bank Nifty. Yesterday we discussed about 15,000, 15,075, 15,150. ये 3 levels active होंगे. We opened at first level, we went at second level, rejected, retested, and then moved down back to the swing points support. ठीक है? So in a way, you can say it is testing the minor BBSP, extreme V reversal का case, and testing the minor BBSP. And while doing so, एक छोटा चैनल इधर बना, एक दूसरा चैनल potentially बन रहा है. I'll put question marks over here. Potentially बन रहा है. So बनेगा तभी शायद all signs indicates that buyers are still on. Okay. So short term narrow range की भी बात कर रहे थे. So let's see how this develops.
ये दो लेवल्स के बीच में, लाइक टुडेज डे लो एंड टुडेज डे हाई के बीच में, वेदर वी फॉर्म अ रेंज और नॉट, दैट वी नीड टू सी फॉर टुमारो. ओके, follow through above the previous day high, that is today's high, will can give you good opportunity. So वो opportunity को do not try to catch the breakout trade over there, because immediately जैसे ही प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, ये सीधा ये बार के सेलर्स को स्ट्राइक करेगा, राइट, ये सब जोन्स इसको अटकेंगे. तो इंस्टेड ऑफ दैट एंटिसिपेट करके यू ट्राई टू पिक योर ट्रेड्स एट द लोअर लेवल्स जस्ट बिफोर द ब्रेकआउट. ओके, सो थोड़ा एनालिसिस डीपली करना पड़ेगा. Not going to be easy this particular expiry. Okay, second thing is after hitting the 50 ka high, 50%, the price fell. अभी यहाँ का जो ATRH है, that is your hourly ATR, right, exactly उसका 2 times का scaled move है, right. तो अगर 2 times का scaled move है एंड जब भी प्राइस नीचे के लेवल पे पहुंच रहा है, that time we do have an volume expansion, sort of, not exactly, sort of volume थोड़ा सा expand हो रहा है, and all, तो it's a good sign कि opposite party is present, मतलब downside के लिए buyers are present. So again, let's see how things plays out. अभी तो भी फिलहाल अगर सेल करना है तो वी विल ओनली सेल बिलो 14800. इसके ऊपर देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग अ सेल ट्रेड. मूव्स बड़ा नहीं मिलेगा. इफ यू आर हैप्पी विथ 50-70 पॉइंट्स देन ओके, अदरवाइज डोंट spoil your bias, and accordingly इसको like do not spoil your bias. बुलिश बायस है तो बुलिश बायस ही रखो, डू नॉट सेल, लेट इट गो. पैसा अगर लगा नहीं है तो पैसा जाएगा नहीं, बट अगर हमारा एनालिसिस सही है तो मूव इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, राइट. तो वहां पे आप उसको बड़ा मूव को कैच कर सकते हो. लाइक दैट यू हैव टू प्लान दिस चॉपी मार्केट. So that's it in this particular session. We next I'll discuss the bar by bar analysis which we talked in the group. So